हमारा क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ अ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज मीडियम, बट मीडियम देखे कुछ देख सोचना, बट इट्स इजी प्रोबेबली। क्वेश्चन बोल रहा है वी आर गिवन एन एरे नम्स, वी हैव टू रिटर्न अनदर एरे आंसर और वट एवर यू नेम यू वांट, एंड वी हैव टू मेक इट सच दैट द आंसर आई मतलब ith इंडेक्स का आंसर should equal to the product of all elements in nums except nums of I. The product of any prefix or suffix of num is guaranteed to be 32 bits or 32 bits integer. ये वाला ignore it for now. I will explain it a bit later. And you must write the algorithm in O of n, and time should be and no division operator. Okay. ठीक है. Let's go with the question first. Okay. Question is saying कि हमारे पास example ये nums दिया हुआ है, and we have to return another integer array. I will call it result array res. हमें return क्या करना है? We have to return another array such that nums of I मतलब ये वाला position should be the product of all of these except this. Basically हम इस example के लिए हमारा return array होना चाहिए 120, 60, 40, 30 and 24. I don't think मैंने multiplication में गलती की है, then that should be the answer. The question is saying कि देखो, I will explain it here. Basically question is saying we are given a nums array. हमारे question में दिया होगा this is nums. We have to return another array. I am calling it res. हैंडराइटिंग छोड़ दो यार, हैंडराइटिंग बहुत खराब है. इन दोनों का लेंथ सेम होगा ऑब्वियसली. इन दोनों का लेंथ अगर इसका n है इसका भी n होगा. एंड व्हाट वी वांट इज, यहाँ देखो इस एग्जांपल में वी आर सेइंग कि 1 2 3 4 एंड 5 इस पोजीशन में ith पोजीशन में या फिर फर्स्ट पोजीशन में वी नीड कि we have to give the product of the entire array except this ith position. ये I है, so now result I should be having the product of everything beside nums of I. So the multiplication this should be put here, this part, that is 120 if I'm not wrong. 2 into 3 into 4 into 5 is 120. And similarly हम जब 2 हटाएं, sorry, for this second position 2 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 4 5 and 1, 3 4 5 this part and 1, so it should be 3 into 4 into 5 into 1, that is 60. Similarly ये 3 भी ऐसे भराएगा. For 3 it should be 4 5 into 2, that is 40. For 4 it is 2 into 3 into 5 into 1, that is 30. And similarly that is 24. सेम है ith इंडेक्स के लिए we are differenting. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? ओके, तो I will tell you 3 approaches for this question. And before I do that, like brute force 3 अप्रोच में एक ब्रूट फोर्स है जिसको अपन को काउंट नहीं करना चाहिए टेक्निकली. बेसिकली इन ब्रूट फोर्स अप्रोच वी विल डू व्हाट, वी विल हैव एक फॉर लूप बना देंगे, फॉर लूप आई वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 0 to n-1, another for loop j which is also going from 0 to n-1, and when I and j are equal we skip the part except एक वेरिएबल ले लेंगे temp या फिर प्रोडक्ट whatever you want to name it. प्रोडक्ट उसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे and we will as long as j is not equal to I we will multiply into product, or we will create another array, answer array, and we will assign it in the ith position. Should I code करके दिखाना है इसको?
because brute force is very simple, to be honest. Okay, before going anywhere else, second approach में जाऊँ उससे पहले, tell me what can you say about these three examples? Anyone? I want someone to respond. माइक में बोल दो क्योंकि चैट देखने प्रॉब्लमेटिक है यहाँ. Anyone? ये तो पुराना ये वाला पहले एग्जांपल है. वाला का तो सेम आंसर होगा. 120, 60, 40, 30 एंड 24. ओके, पहले वाले का सेम है. सेकंड का बताओ भाई. सेकंड का होगा 120 0 0 120 0 0 जीरो 0. सारा रेस्ट जीरो होगा. नाइस. ओके, एंड द थर्ड रिजल्ट सबका All जीरो will be होगा. 0. सब जीरो होगा. नाइस, सबको समझ में आ रहा है. गुड. ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल हुए. एंड इफ वी आर सेइंग कि एज केसेस कोई है इसके अलावा, कोई और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हमें ब्रूट फोर्स लगाना नहीं है. ब्रूट फोर्स इज इनएफिशिएंट. वी गो ओ ऑफ एन स्क्वायर. वी हैव टू डू इट इन ओ ऑफ एन एटलीस्ट. तो इन तीनों केसेस को देख के कुछ आइडिया आ रहा है कि क्या हो सकता है हमारा नेक्स्ट अप्रोच. एनीवन? आई गेस आई शुड इंक्लूड अनदर एग्जांपल हियर. Example 4 where nums is equal to 0 0 3 4 0. इसका रिजल्ट क्या होगा? सेम एज थर्ड. Yes. सेम एज थर्ड, राइट? हाँ, सेम एज थर्ड. Yes. तो जो भी ith में है, जो भी I में है, उसके प्रीफिक्स और सफिक्स के मल्टीप्लिकेशन को ith में डालना. दैट इज द ऑप्टिमल अप्रोच. दैट इज द थर्ड अप्रोच. नाइस वन. बट ओके, थर्ड अप्रोच में जाएंगे. किसी को इन तीन एग्जांपल को देख के क्या आ रहा है पहले वो बताओ. एनीवन? एनी अदर आइडियाज? नो? फोकस ऑन द नंबर ऑफ जीरोज. कि हमारा जो रिजल्ट सेट है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जीरोज, राइट? एक जीरो है दिस. मोर देन 1 0 वी आर हैविंग ऑल जीरोज, राइट? Exactly. Agar it's more than 1, then we will put everything 0 in the result set. If it's 1, we will put the product where it is I is equal to 0, nums of I is 0. And agar 0 nahi hai, then we will put the product simply, directly. ठीक है? What this is, I will show you the code. Code होगा मेरे पास. This is कोड करके दिखाना है कि जस्ट मैं समझा दूँ यहाँ? Okay, this is the code. Okay, क्या कर रहे हैं हम? We are having an integer n जो कि लेंथ बता रहा है. We are having a flag और num count for 0 जो कि zeros काउंट करेगा. And we are having a long. यहाँ we are taking long because कभी कभी दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन get like bigger than the maximum value of integer can take. Java में 32 bits का होता है integer, and sometimes the product can get bigger than 32 bits. So we are taking long in the product and it will be initialized with 1. क्या करेंगे हम? If हम एक लूप चलाएंगे जिसमें we were checking कि if x is 0, then उस number of zeros को बढ़ाओ and don't multiply with product. And if it's not 0, we will multiply product into x. Second time हम क्या करेंगे? We are initializing an array, answer array, जो हम return करेंगे बाद में. And then if the number of zeros is greater than 1, we will directly put answer I is equal to 0. If it's equal to 1, then only when it is, okay, let me, ternary operator में भी थोड़ा, टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ रहा है या उसमें कुछ डाउट है? दिस इज टर्नरी ऑपरेटर बाय द वे. यहाँ जो भी हो रहा है, इफ एनीवन हैज अ प्रॉब्लम विद दैट यू कैन आस्क. वो बस ये लाइन बस बोलना चाहता है, if nums of I is 0, we will put product. This is typecasting. And if it's not 0, then we will put 0 here. Basically ये वाला केस कि if
if nums of I is 0, we will put the product of the entire array. हम प्रोडक्ट डालेंगे और बाकी में हम जीरो डालेंगे. That's what this line is doing. And last is, if there is zero, like number of zeros is zero, confusing हो जाता है, then answer में हम we will directly put product divided by nums of I. This is approach 1. Approach 1 is basic, like cases देख के we can go कि क्या हो रहा है approach 1 में. But what is our approach 2? Approach 2 is what uh, Tanisha, right? It was Tanisha who said Yes. that. हाँ हाँ, it was Tanisha who said that कि हमारा approach 2 का भैया problem. कोड फिर से दिखाना. Okay, what is this? This card. Okay, this code. I will write the code too if you want. Do you want me to write the code? तुम्हारे सामने लिख दूँ? Would that be helpful? Or you would like, यहाँ से समझ में आ रहा है. देख लो. Any problems in the code? Any doubts? Need the... क्या समझ में नहीं आ रहा है? पूछ लो. We can also add a break statement inside if or else, because if 0 is more than 1, then we should not have to iterate the entire array. You're saying कि हमारा जावा में initialize with 0 हो रहा है इसलिए? Yes. Yeah, that is correct, because हाँ, that is actually correct. अगर हमारा answer in Java, all objects are initialized with like primitive data types का initialization like integer का 0 होता है. So by default array includes is a array of zeros. So what you are trying to say is correct. हम अगर यहाँ normally इसको हटा के एक break डाल दे, we return answer directly, that would be the correct answer. Like break डाल दो, direct return करो, we will have a array of zeros. That is correct. I'm like ये मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि it's not always apparent कि ये zero होगा, just to make explain the part. कि what we will do is, for let's say कि हमारा array, this is our array. Yeah, this array we are trying to solve this array. तो हम क्या करेंगे? We will, for this index, we will have to multiply the prefix of this and suffix. मतलब prefix पीछे का, suffix आगे का, दोनों को we will multiply and put here. ठीक है, we can do that. हम brute force में भी हम technically वही कर रहे थे, but the optimal solution is हम उसको दो बार like दो iteration में complete करेंगे. How do we do it? First हम एक okay, let me do it here. एक हमारा एक बेटर नम्स ले लेते हैं, इसमें तो सारा जीरो ही होगा. नम्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. एंड वी विल ऑल्सो हैव एक हम एक आंसर एरे ले लेते हैं. ans इज इक्वल टू empty. अभी empty है या फिर filled with zeros है, that is okay. What we do, हम first iteration में हम क्या करेंगे? We will have a variable prefix या फिर pre. You call it pre. It is initialized with 1. What we do, we will, हमारा loop चलेगा जैसे for loop का line. The first line would be array of answer I is equal to pre, and second line would be pre is equal to p multiply equal to nums I. And the order of the instruction is important here. क्यों? What we are doing is, right now pre is 1, ठीक है, and we will हम first line करेंगे, pre will be assigned here, then pre will be multiplied with nums of I. Nums of I is also 1.
तो दिस विल बी अपडेटेड टू 1. नेक्स्ट लूप में हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी विल ऑल्सो बी गिविंग 1 बिकॉज फर्स्ट लाइन पहले, देन इट विल बी अपडेटेड टू 2. देन क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? फॉर third index, it should be the multiplication of these two that will be put in the third index. We are having the multiplication of the before array before that. Did you get it, this part? अरे इतना गंदा हो गया, sorry. Sorry. Anyways, छोड़ो उसको. Did you get it? क्या हो रहा है यहाँ? Why we are assigning the answer first and then multiplying? Everyone gets it? Any doubt? Okay, okay, okay. Abhinandan, can you Similar. please repeat it? Okay, okay, it's fine. Let me show it in a clear space. यहाँ समझ में नहीं आ रहा है. I will do the same thing. This is nums. हमारा जो भी array था 1 2 like 2 3 4 5 6. Let's say this is our nums. हमारा result array is empty right now and we are having a variable pre assigned with 1. Okay, we have two instruction. For loop हम करेंगे. We are first instruction is result I is assigned pre, and then pre is equal to pre into pre is equal to pre into nums of I. ठीक है, the order of instruction is important here. Why? देखो, first is हमारा I यहाँ आया. I is on 2 right now. We will first assign this result of I is pre, so 1 यहाँ assign हुआ. Then after that we update pre into 2. 1 into 2, 1 था पहले, 2 हुआ. Okay, 1 into 2, pre is 2 now. I comes to this next loop आया, for loop चल रहा है ये, and I comes to the next iteration. Here we will assign 2 in this position because the result of I is pre. Then we will update 2 into 3 6. Okay, next next iteration में यहाँ 6 आएगा because 6 and 6 will be updated to 6 into 4 is 24. Yeah, क्या हो रहा है यहाँ? For the ith position, this is the ith position, result I holds multiplication of all the elements before nums of I. That part is correct. That part वो समझ में आ रहा है? Okay, okay. This is basically हम prefix, हमने prefix sum देखा था. What इसके previous question में we are doing prefix sum. This is prefix multiplication. We are doing exactly हम जो कर रहे थे पिछले question में, and we are filling this array with prefix multiplication. यहाँ 6 था, यहाँ 24 आएगा, and 24 के बाद यहाँ 120 आएगा. Last iteration में pre will convert into 720 I believe, but that data is irrelevant. वो बाद में like वो waste ही हो रहा है, वो कभी input array में आएगा नहीं. I'm sorry. ठीक है, ये हुआ फर्स्ट हाफ. ये कर क्यों रहे हैं हम? दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ये कर क्यों रहे हैं. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वी ऑलरेडी हैव रिजल्ट नम्स दोनों है. वी विल हैव अनदर वेरिएबल कॉल्ड सफिक्स और सफ. इट विल ऑल्सो बी इनिशिएटेड विथ 1, एंड उसमें हम क्या करेंगे? वी विल run a reverse loop this time. How? For I is equal to n minus 1, I greater than 0, I minus minus. ठीक है, रिवर्स चल रहा है, मतलब I डिक्रीज हो रहा है. I will be start from here. Okay, and डिक्रीज में क्या होगा? We will do the same हमने जो यहाँ किया था. We will put result of I is equal to suffix, and suffix is equal
suffix is equal to suffix into nums of I. What? क्या हो रहा है यहाँ? बेसिकली हमने यहाँ क्या भरा था? Let me write it here first. Result of I is equal to into is equal to suffix, and suffix into is equal to nums of I. क्या हो रहा है यहाँ? लास्ट इंडेक्स के लिए देखो, हमारा सफिक्स इज राइट नाउ इट्स 1. फॉर द लास्ट इंडेक्स we will multiply 1 with 120 and no, we will, sorry, that's where it's wrong. Not multiplication. We will directly assign this. So right now हमारा 1 will be assigned directly to this result here. Similarly, next time जब हमारा वो आएगा, suffix will be multiplied with this. Suffix 1 से 6 होगा because nums of I is 6. And next time we will, rather than 24, we will have, instead of 24, it will be 6, 6 into 24. I guess यहाँ explanation में problem हो रही है. Are you getting what I'm trying to say? क्योंकि I guess I should show the visualizer. It's hard to understand like this. Okay, देखो. We are having, what we are doing, prefix हमारा एक है. This is loop for the prefix multiplication, and we are having a suffix here. Suffix multiplication ऐसे हो रहा है. देखो, the array is 2 3 4 5 6. Let's run it. N is equal to 4. Length of array is 4. Prefix is 1. ठीक है, लूप में आया. I is equal to 0 right now. हम बेसिकली प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे. I is 1, this is 1, this is 2 and this is 6. क्या हो रहा है? This is all, ये हमेशा ही 1 रहेगा. And wait a second. Oh, sorry. Yeah, आंसर ऑफ 1 इज ऑलवेज आई, क्योंकि इससे पहले कुछ है नहीं, 2 से पहले कुछ है नहीं, तो इट्स ऑलवेज 1. देन it is 2. It is the multiplication of these two is 2 for third. Next, the इन दोनों का multiplication is 6. Then इन दोनों का multiplication 24. That is how ये पूरा लूप आया. 720 आया प्रीफिक्स का लास्ट आइट्रेशन में, बट दैट इज रिडंडेंट. वो हमारे आंसर एरर में आएगा ही नहीं कभी. नेक्स्ट, हमारा सफिक्स इज इक्वल टू 1. वी विल हैव सफिक्स लूप चल रहा है अब, सेकेंड लूप. सफिक्स में हमारा 1 पहले से है. नाउ वी विल मल्टीप्लाई सफिक्स, पीछे से चल रहा है सफिक्स. सफिक्स विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द एरे, एंड सफिक्स इज इक्वल टू answer of I multiply equal to suffix means कि answer of I is equal to answer of I into suffix. It starts with 1. So basically यहाँ 1 into 120 हो रहा है, that is no change. फिर suffix is equal to 6. Next time हम suffix is equal to 6 into 24. It was 24, right? Yeah. 6 into 24, इन दोनों का multiplication यहाँ. तो what's happening right now कि for this position what we are doing is, पहले हम first iteration से we did the multiplication of this side
प्रीफिक्स, एंड सेकेंड लूप में हम वी आर मल्टीप्लाइंग दिस साइड, एंड देन उनका प्रोडक्ट को हम आंसर एरे में रख रहे हैं. फॉर एवरी आइट्रेशन हमारा यही हो रहा है. फर्स्ट आइट्रेशन वाज फिलिंग द प्रीफिक्स, द सेकेंड आइट्रेशन इज मल्टीप्लाई विद द सफिक्स, एंड एट द एंड हमारा करेक्टेड एरे निकल रहा है. वी कैन ट्राई फॉर द एज केसेस, इट विल वर्क. लाइक उनका तो समझ में आ ही जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 0 ही हो जाएगा. ओके, लेट्स कोड दिस पार्ट. int n is equal to nums dot length, int int an is equal to new int array of size n, int pre is equal to 1 for int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, ans I is equal to pre, pre multiply equal to nums I. ठीक है, डन. नाउ सफिक्स, int suf is equal to 1 for int I is equal to 0, not 0, int I is equal to n minus 1, I greater than equal to 0, and I minus minus. Answer of I multiply equal to suf, suf multiply equal to nums of I. All right, and last में return ans. ओके, लेट्स सी काम कर रहा है कि नहीं. या, इट्स वर्किंग.